तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अखिलेश कुमार त्रिपाठी जी से कि प्लीज वो कंटिन्यू करें। थैंक यू। Hello, Aakarsh. Hello, sir. Please tell us your intro without telling your name. I completed my VLLB in 2021 from Dr. Ram Manohar National Law University, and from then I'm just preparing for this exam. My hobbies include in fitness. I like running in the morning and now watching sports, every kind of a sport basically. And right now, sir, for the past 6 months, I've started reading books also. And the last two books I read are The Monk Who Sold His Ferrari and The Alchemist. And these two books really impressed me a lot, and I read it twice, both of the books. What is your favorite law section? Favorite, sir, means it basically substantive law like Contract Act, Transfer Property Act, and Evidence Act. I scored good marks in those subjects during my law college also. So what are the three main principles of Evidence Act? The three main principles of Evidence Act are, first is the best evidence rule. Your evidence always has to be direct, like in section 60 of IPC and of Indian Evidence Act, and best evidence rule. And sir, okay, all right. Is the Evidence Act lax Fori or lax Loki? Sir, it's lax Loki. It means it's the local law of the forum. What is an admission? So admission basically is divided in section 17 of the Indian Evidence Act. It suggests it suggests an inference made by any statement, and if it is admitted, then there is no need to prove that statement, according to section 56 of the Indian Evidence Act. What is the evidentiary value of admission? Evidentiary value of admission is it basically acts as an estoppel. It's not a substantive piece of evidence. It is mentioned in section, I cannot recall that exact section right now, but it's also mentioned in the Indian Evidence Act. But section 56 also says that there is no need to prove if the statement is admitted. Can you tell me the citation of POCSO Act? Sir, it was passed in 2012 in December. What is the full form of POCSO Act? The Prevention of Children from Sexual Offences Act. Okay. When did the Indian Penal Code came into force? In 1st September 1862. Are you sure? How many stages of offences are in IPC? Offences include, first is preparation, then the act, and then the desired result, and the injury. Intention is punishable or not? Sir, intention is not punishable per se, but there are few exceptions, like intention to commit dacoity in section 396 of IPC. What are the type of punishment in IPC? So punishment, 5 types is basically fine, imprisonment. Imprisonment can be 2 types: simple imprisonment and rigorous imprisonment, and death. And one more is there. Okay, state the section under which death penalty is made. It's 120, section 121, section 121, section 302, dacoity with murder, and 364A, kidnapping for ransom. And so just added in 2018 Amendment 376 AB, when the offense of rape is committed against a girl of 12 years, less than 12 years of age, and section 376 DA also, when a gang rape is committed against a girl child of less than 12 years of age. क्या आजीवन कारावास साधारण हो सकता है? Sorry, sir, I do not know that.
You told that your hobby is running. Yes, sir. So tell me that how many medals India have won in running, in racing, in Commonwealth game, as well as in Olympic game. Sir, in Commonwealth Games, India this time has done very well, and it won the gold medal and the silver medal in the long jump. And in Olympics, I think, sir, India got its first track and field medals from the Neeraj Chopra only. So I don't think in Olympic we have won in racing events. And Who is the head of Indian Olympic Committee? sir, Indian Olympic Committee, sir, PT Usha. What is the full form of PT Usha? Sir, Pila Wala Kandi, Sati, I cannot recall. Pila Wala Kandi. What does judicial notice mean? Judicial notice. The judicial notice, I think, sir, means cognizance, taking cognizance of something. Okay. Now I would like to request Jan sir. Sir, please continue your interview. Thank you very much, Aakarsh. Thank you so much. Aakarsh, can you define consideration under Section 2D of Indian Contract Act? Yes, sir. When at the desire of the promisee, or any other person has done or does or promises to done something in future, it's said to be a consideration. Okay, and what considerations and objects are lawful and what not? So Section 23 defines consideration which are unlawful. Basically, any consideration which are unlawful means any consideration which defeats the provision of the law, any which is against the public policy, or any which involves injury to the person, any which involves fraud. These are unlawful consideration according to Indian Contract Act. Okay, Aakarsh, an agreement made without consideration void. Is there any exception in the Indian Contract Act? Yes, sir. An agreement without consideration is yes, sir. Section 25 mentioned that if gift is made to any person who is a near relative for love and affection, or for a past volunteer service, which a promiser has maybe legally compellable to do or has promised to do, and third will be when a contract or a limit is limited by Limitation Act, then anything less than consideration. Okay, and can you define contract of bailment? So bailment is transfer of movable property to some person to some other person for some purposes. Okay. The possession will remain to the person B, and the ownership will remain to the person who is transferring, who is passing to the possession. Okay, Aakarsh, and what agreements are contracts? Sir, any agreement which are enforceable by law are contracts. And what is enforceable by law? Enforceable means is the contract which fulfill all the criteria, like the party must be competent to contract, the object should be lawful, the object should be lawful, the consideration should be lawful, and the party should not be of unsound mind, and the object should be should be lawful. I already said that. Sorry, sir. Okay, Aakarsh, can you explain what is the difference between final report and charge sheet? The final report and charge sheet. The charge sheet is filed under Section 173(2) by the police, which to the magistrate who is going to take the cognizance of it. And the final report, I think it's final report. I think final report, it's a report filed by the police also, in which it says that no offense against the accused has been committed. So there is no charges against him. And what is charge sheet? The charge sheet basically is all the charges against the accused which the police have gathered through information, through evidence, and it's transferred to the magistrate who can take cognizance on it and to proceed with the trial. Okay. And what is protest petition? The protest petition is when protest petition is filed when the accused
has been not been charged by the police or the magistrate have not accepted the charge sheet as per se, then the protest petition has been filed to the magistrate against their decision or order. Okay, Akash, my last question to you. What is the basic difference between mortgage and pledge? Mortgage, sir. In this mortgage, a specific interest in a immovable property is transferred to a person for for security as a debt or a promise to perform any obligation which can rise to pecuniary liabilities. The pledge is a transfer of movable property for one person for securement of that debt. It's a movable property for securing Okay, of any Akash. debt. Okay, Akash. Okay, I would like to request Mr. Ravi sir, kindly continue. Thank you. Very good evening, Akash. Good evening, sir. Akash, as you have mentioned, your favorite subject is the Indian Constitution. So I just wanted to know ki originally how many articles and the schedule are contained our Indian Constitution. 395 article and 10 schedule were in the original constitution. Okay, and after amendment? Sir, now we have 12 scheduled and article, sir, in 400 something, sir. I do not exactly know the figure. It's in 400. I'm sorry. Okay, leave it. Akash, can you explain the doctrine of eclipse? What it says? Sir, a doctrine of eclipse said is enshrined is basically related to Article 13. It says any law which is in contravention of Part 3 of the Constitution will not become void ab initio. It remain eclipse, and if any change in the future happens, then the law will revive itself. So it will not be void ab initio. It will remain in a dormant state till it is in contravention with any part of 3. But if in future is there a change in the law, then the law which was eclipsed can revive itself on its own. Okay. Akash, recently in Maharashtra, the one of the High Court judges has given their resignation in an open court. So I just wanted to know ki if the sitting judge of the any Honorable High Court or the Supreme Court of India is willing to resign. So what is the procedure and to whom the resignation is must be given? So the resignation must be given to the Chief Justice of India. Okay. Is there any provision under Indian Constitution? Yes, sir. In article, I'm sorry, sir. Okay. Have you heard the word of the national emergency? Yes, sir. What it says? Sir, it's defined in Article 352 when the security of the nation through any war, external aggression, or armed rebellion, then the president, on the written direction of the cabinet, can proclaim emergency for whole part of India or any part of the India. And Akash, let's suppose if a person whose name is X and that person is a real apprehension that he might be arrested at any moment of time. So I just wanted to know what kind of remedies that person is having from district court to the Honorable Supreme Court, because that person is not willing to go into the jail. Sir, he can file petition for anticipatory bail under Article 438 of the CRPC. So whenever he is about to arrested, he under can Article 432 of the CRPC. Yes, sir. Section 438. Before whom? Anticipatory bail can only be filed before High Court. Let's suppose, Akash, if the Honorable High Court has rejected their anticipatory bail application, then what he will do? Sir, then he can approach the Supreme Court, sir, through under Article 136. Okay. Okay. Akash, kindly explain the process of the issuing a summons to a witness. Summon to witness, sir, it is in order 36. I'm sorry, sir. Sir, it is. Sir, I do not recalling this. Okay, I just wanted to know what are the protection of given under the Indian Evidence Act between the husband and the wife? Sir, a husband and wife, any conversation made between husband and the wife during marriage or even after they are separated, they cannot be witness against each other. But there are exception to it. Under this section? Sir, under section 122. Okay.
Akash, please try to explain the doctrine of accumulation under the Transfer of Property Act. Sir, it is in section 17 of the Transfer Property Act. It is an exception to the rule that when a property is transferred, he is absolute owner. So when the property is transferred, and an extra condition can be left, can be even basically for maintenance by the seller to the purchaser, through which he can accumulate certain profit arising of the land for a period for his lifetime or the period of 18 years, whichever is longer. And there is exception to it Okay. that if आकर सपोज करिए मैं और आप हैं, हमारे आपके बीच एक सिविल केस चल रहा था, वो मुकदमा मैं जीत गया और आप हार गए। अब आपके पास वो कौन कौन से विकल्प हैं जहां पर आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकें सिविल प्रोसीजर कोड के तहत? okay, sir, I can file for a review also, and I can file for appeal also. And if there is no appeal available, then I can file for revision also. Okay, thank you so much, Akash. Now I would like to request Honorable Satyendra sir. He will continue with you. Thank you so much, Akash. आकाश Thank जी, you so आप much, sir. कंफर्ट हैं आगे बात करने में? Yes, sir. अच्छा, मुझे बताइए, मान लीजिएगा आप किसी जनपद में एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त हो जाते हैं और आपकी कुछ ही दिन ही नियुक्ति हुई है। अचानक से क्या होता है कि आप मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं और आपको पता भी नहीं कि जिस आवास में आप रहते हैं वहीं पर जो आपके सीनियर एसीजीएम या सीजीएम जो भी हैं उन्हें मान लेते हैं और उनसे आपका झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा आपके अगेंस्ट हो जाता है और वो आप पर कुछ ऐसा अटेम्प्ट करते हैं जो अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकते हैं। जी तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? सर, उस सिचुएशन में सर मैं एफआईआर फाइल कर सकता हूँ, पुलिस रिपोर्ट सर, कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी फाइल हो सकती है। लेकिन सर प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट होगी क्योंकि वो एक ऑफिसर है, तो सेक्शन 197 लग जाएगा क्या आप सीआरपीसी का गिरफ्तार कर सकते हैं? प्रीवियस। यस सर। गिरफ्तार कर सकते हैं आप उन्हें? सर सर कर सकते हैं सर, सेक्शन 44 सीआरपीसी के अंदर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है और मैं उसके खिलाफ वारंट दे सकता हूँ। लेकिन सर प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होगा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का। चलिए, अब यही सिचुएशन मान लीजिएगा आप पांडुचेरी जाते हैं यहाँ से और पांडुचेरी ही वही सीनियर ऑफिसर जाते हैं, आपकी जानकारी में है नहीं, अचानक से सेम इंसिडेंट वहाँ हो जाता है। आप पोस्टेड यूपी में हैं और ये इंसिडेंट सेम पांडुचेरी में हो जाते हैं, तो क्या ग्राउंड सेम रहेंगे या चेंज हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे सर, क्योंकि वहाँ मेरा सर जुरिडिक्शन नहीं होगा, तो मैं उनको अरेस्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि जुरिडिक्शन के अंदर ये कर सकते हैं अगर कोई भी ऑफेंस हो। तो सर वो सर फिर एक पब्लिक प्लेस हो जाएगा, तो मैं एफआईआर ही करूंगा उनके खिलाफ वहीं। ओके, आप खाली समय जब आपको मिलता है तो आप क्या करते हैं? सर अभी तो सर पहले तो मैं टीवी सीरीज देखता था सर, क्राइम थ्रिलर सीरीज मेरे को बहुत पसंद आती। और अभी सर रिसेंटली जैसे सर मैंने बताया सर, थोड़ा बहुत बुक पढ़ने लगा हूँ, कुछ लोग ने एडवाइस दिया कि वो कैब सही कर लो, तो बुक पढ़ रहा हूँ। तो वही 2 बुकें अभी पढ़ी हैं, तीसरी बुक पढ़ रहा था तब तक सर ये रिजल्ट आ गया। तो अभी तो कुछ नहीं, खाली समय में सर इस टाइम तो खाली समय बिल्कुल नहीं। तो उस टाइम पे अगर होगा तो सर क्राइम थ्रिलर में देख रहा था काफ़ी, वो सर मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। ओके, आपने अभी क्राइम किलर वर्ड यूज़ किया है। आप मुझे बताइए कि अभी उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की घटनाएं बहुत ज़्यादा घट रही हैं, आपके सुनने में भी आया होगा, क्या सही है या गलत है? सर अब मैं सर बाहर से अगर थर्ड पर्सन की ऊपर से दे सकता हूँ, तो सर पुलिस के पास न्याय करने का अधिकार नहीं है, वो जज का काम है, तो ये उन्हीं करना चाहिए। लेकिन सर कभी कभी सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाती है, जब कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है, वो आराम से अरेस्ट नहीं हो रहा है, तो सर सीआरपीसी प्रोविजन है कि हर फोर्स एनी फोर्स नेसेसरी कर सकते हैं। और अगर वो जो जिसका एनकाउंटर हुआ, अगर वो किसी मामले में जिसमें डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट की पनिशमेंट दे सकते हैं, तो उसमें डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो सर वेरी गुड। सेम सेक्स मैरिज का आपने सुना होगा अभी, यस आप सर। इसके फेवर में जाएंगे या फिर इसके अगेंस्ट हैं आप? सर
ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि बहुत सारे लॉज हो जाएंगे अगर सेम सेक्स अलाउ कर दी गई, क्योंकि फिर उसके बाद इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, मैरिज, डिवोर्स, एलिमनी, मेंटेनेंस, ये सब में फिर चेंज करना पड़ेगा। ये कोर्ट का काम नहीं है, ये लेजिस्लेचर का काम है। तो सर अभी मेरे हिसाब से, क्योंकि है तो बड़ा प्रोग्रेसिव चीज, कर देनी चाहिए। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक बैन किया, उसके बाद पार्लियामेंट लॉ लेके आई कि उसको क्रिमिनलाइज किया, तो अभी ये कर सकते हैं, क्योंकि कि ये लीगल हो सकता है अगर पार्लियामेंट लॉ बनाए इस कंडीशन के साथ। तो मेरे ख्याल से ये राइट अप्रोच रहेगी। बट सुप्रीम कोर्ट मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट चलिए, देगी मैं जो भी कही। मैं इसी पे आधार मानते हुए एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको। मान यस लेते सर। हैं पार्लियामेंट इस पर एक कानून लेके आ गई और भारत में सेम सेक्स मैरिज एनफोर्समेंट कर दिया, और आप उस कमेटी में हैं जो इसका ड्राफ्ट तैयार कर रही है। यस सर। अब भारत में एक विधवा पेंशन का कॉन्सेप्ट भी है। अब मान यस लीजिएगा सर। जिन दोनों लोगों ने, ए और बी, जो सेम सेक्स हैं जिनका, शादी करी है, आप ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर हैं, आप विधवा पेंशन देने के फेवर में रहेंगे सेम सेक्स में या नहीं? सर विधवा पेमेंट आई थिंक ये सर आर्टिकल 15(3) से आया है, उसमें वुमेन एंड चिल्ड्रन स्पेशली मेंशन है, उसमें जेंडर न्यूट्रल टर्म यूज नहीं हुआ है, तो मैं उसके अभी नहीं रहूंगा। अगर अलग से लॉ बन रहा है तो हो सकता है उसके लिए अलग से लॉ बने, लेकिन विधवा पेंशन सिर्फ वुमेन के लिए होना चाहिए। अच्छा, 9 माइनर एक्ट में जो अभी आपके सिलेबस में जोड़े गए हैं, Yes, अकॉर्डिंग टू सिलेबस सबसे ओल्डेस्ट कौन सा एक्ट है? सर सबसे ओल्डेस्ट, सर एक मिनट, सर डाउरी प्रोविजन है सर 1961। कितने सेक्शन है टोटल? सर 32, नहीं, आई सर दो, आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो। आपकी शादी हो गई है? नो सर। आपकी शादी होगी तो आप सबसे पहले हनीमून पर कहाँ जाना पसंद करेंगे? सर सोचा नहीं थी, तो अभी बड़ा टाइम है। चलिए, आपका मॉक कंप्लीट होता है। आकर जी, आकर जी, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। आपने एलएलबी कहाँ से किया है? सर राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी। मूल रूप से कहाँ से हो आप? सर लखनऊ से। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? क्या क्या कमियां लग रही हैं, क्या अच्छा लग रहा है? कुछ सेल्फ रियलाइजेशन क्या हो रहा है? सर थोड़ा रिवीजन की कमी है, कुछ चीज़ें मैंने गलत बोली हैं, और सर क्योंकि सर जैसे अब सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा और मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाया, थोड़ा एंग्जाइटी किक्स हो गई, तो मैंने फिर बहुत जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट कर दिया। ये दो चीज़ें मुझे अभी लगी हैं, और भी थोड़ा करूँगा पता चलेगा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप कुछ थोड़े से कुछ मामलों में ओवर कॉन्फिडेंट हैं? ऐसा कुछ है क्या? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है सर, मैं तो नर्वस बहुत था सर, कुछ भी मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। जब मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा था तो आप उतने मतलब फॉर्मल बात क्यों करने लगे, जैसे रिजल्ट और विजल्ट? या सर वो नर्वसनेस थी सर, वो मैं इस पे काम करूंगा, मुझे भी लगा वही, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा रहना चाहिए। आपने अपने वार्न किया था कि वो लोग कंफर्टेबल करते हैं, फिर आप भावनाओं में बह जाते हैं, वही हो गया सर मेरे साथ। तो बिल्कुल। मैं उस पर काम करूंगा मैं, आप थोड़ा मैं। आपको अपनी लिमिट क्रॉस, एक लेयर है, उस लेयर के उधर नहीं जाना है आपको। वो सब हाँ कुछ सर वो। करेंगे, हम लोग सब कुछ करेंगे। मैंने यस हँसने के लिए यस जानबूझ के हनीमून वाला क्वेश्चन रखा था, और मैं देखना चाहता यस था आपका बॉडी गेस्चर क्या रहेगा। यस। आपकी 2 सबसे बड़ी मेजर कमियाँ निकली हैं हमारे इस मॉक में। एक, आपका हेड यानी जो सिर है, यस इसका जो सर। बहुत मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब, और ओके इसी से आई कॉन्टैक्ट बिगड़ रहा है आपका। ओके सर। अगर आप इस पे काम कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और ये अगर ओके इस पे काम नहीं किया तो आपका इंटरव्यू गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? जो हम ओके सर। चाहते नहीं हैं। तो ओके किसी भी दशा में, किसी भी कंडीशन में आप आई कॉन्टैक्ट तोड़े ना किसी से भी। दीवारों पर ओके ऊपर-नीचे देखना, ये बिल्कुल नहीं। हालाँकि ओके। हमें आपके हैंड नहीं दिख रहे हैं, मतलब हो सकता है आप जिस तरह से हेड को मूवमेंट कर रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, हम्म, हो सकता है इस तरह हम्म, से फिंगर्स भी हिला रहे हों, तो आप प्लीज़ सबसे ज़्यादा काम आप इस पे करिएगा। ओके कॉन्स्टिट्यूशन आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट है आई थिंक, यस सर। तो उस पे आपको और काम करने की ज़रूरत है अभी। ओके ओवर कॉन्फिडेंट लगे कुछ मामलों में, जल्दी-जल्दी आंसर करा आपने, तो उस पे ओके आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपका और ओके कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। सर। और सर यही है सर, मतलब बेसिकली आपने बता दिया सब कुछ जो मुझे दिक्कत लगी। सर जैसे मतलब बेसिकली कभी कभी नर्वसनेस हो जाती है, तो कुछ चीज़ें बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लगती है,
उसमें मेरा कंट्रोल नहीं रहता है, जैसे सर की बात की आपने। उसके लिए तो मैं सर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डेली 15 मिनट की सेटिंग लगाइए, केवल 15 मिनट के टाइमर लगा के, 15 से 20 मिनट की। यस सर। जैसे रिवाइज़ ही करना है, खुद ही रिवाइज़ करिए, 15 मिनट मोबाइल फ़ोन जैसे आप रखा है, ऐसे बैठ के खुद से बात करिए, तो वो हैबिट में आ जाएगा, ठीक है? ओके। एंड फ़ैमिलियर मत होइए, यदि आपके जानने में, पहचानने में ऐसे दोस्त हैं, कोई नोन है, जो जिनसे आप टच में हैं और फ़ैमिलियर बात करते हैं, तो अवॉइड कर दीजिएगा, उसी का प्रभाव आप पर ज़्यादा है, फिर आपकी सारी पढ़ाई-लिखाई खराब हो जाएगी, ठीक है? ओके सर। हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएँ हैं और हम ओके सर। ओके। थैंक यू सर।